हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ये पैराग्राफ आप देख रहे हैं, मैंने इसको ब्रैकेट फॉर्म में डाला है क्योंकि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये चैप्टर का कॉमन इंट्रोडक्शन है, पहले कैसा सीखा था और अब कितना आगे मतलब सिलेबस का वो दिखा रहे हैं, उस टिप से है ये। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6.1 Why do we respire? In chapter 2 we have learned that all organisms are made of small microscopic until called cell. So it means जो सभी ह्यूमंस होते हैं वो सभी लोग जो बने होते हैं वो उसके बने होते हैं सेल्स के, and those cells make a proper human, and those cells are very useful. A cell is the smallest structure and functional unit of an organism. सेल इतना छोटा होता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म टाइप से होता है, छोटा। एंड each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, extraction and reproduction. जितने भी हमारे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिशंस भी अपने अंदर होल्ड करते हैं, ट्रांसपोरेशन भी, एंड एक्सट्रेशन एंड रिप्रोडक्शन. To perform these functions, the cells need energy. जो सेल्स को, अगर ये जो मैंने अभी आपको बताया ट्रांसपोरेशन, एक्सप्रेशन एंड रिप्रोडक्शन, इन सभी को करने के लिए सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है. Even when we are eating, sleeping or reading, we requires energy. अगर या फिर अग, बल्कि बल्कि जब हम भी खाते हैं, सोते हैं, बुक्स रीडिंग करते हैं, हमें भी एनर्जी की जरूरत होती है. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? पर ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी हमारे पास फूड से आती है. बट वेयर डज कैन यू से why your parents insist that you should eat regularly? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपको क्यों कहते हैं कि आपको खाना डेली खाना चाहिए, एंड इट शुड बी रेगुलर टू योर डाइट एंड इट शुड बी प्रॉपर मील. वो इसलिए कहते हैं बिकॉज फूड्स जो खाना होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई वांट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. आप इसको हाईलाइट कर ले, ये पॉइंट. The food has stored energy which is released during respiration. Respiration के टाइम एनर्जी यूज की जाती है. Therefore, all the living organisms respire to get energy from food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रेस्पायर करते हैं एनर्जी पाने के लिए खाने से. ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते समय हम हवा को ब्रीथ करते हैं. वी ब्रीथ इन एयर. यू नो दैट एयर कंसिस्ट ऑक्सीजन. क्या आपको पता है जो हम एयर लेते हैं वो ऑक्सीजन कंसिस्ट करती है. वी ब्रेथ आउट air which is rich in carbon dioxide, and the air we breathe in the transports to all the part of the body until it in the cells. In the cell, oxygen is air helped in the breakdown of food process. It is also important. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration, and the cellular respiration takes place in the cell of an organism. In the cell, the food को हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं. And
जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है वो यूज किया जाता है और ऑक्सीजन भी। When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, जब ग्लूकोज यानी फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के साथ किया जाता है सो उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड फूड कैन आल्सो बी ब्रेक डाउन यूजिंग without using oxygen. This is called anaerobic respiration. So this terms means जो खाना होता है, जो हमारा खाना होता है, अगर वो टू टाइप से ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उसको ऑक्सीजन के साथ भी एंड विदाउट ऑक्सीजन भी। जो ऑक्सीजन के साथ किया जाता है उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड जो ऑक्सीजन के बिना होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इससे पहले मैंने ये छोटी छोटी दो टर्म्स में अभी बोल रीड कर रही थी, ये मैंने सभी एक स्पेशल वीडियो बनाई है उसमें मैंने करवा रखे हैं। एंड दिस इज द केमिकल इक्वेशन in the presence of oxygen. Why it is in presence of oxygen? Because it is written here. And presence of oxygen, it's aerobic respiration. And you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the presence of air. They are called anaerobic. Anaerobics. So जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो एब्सेंस ऑफ एयर यानी हवा के बिना रह सकते हैं, और जैसे ऑक्सीजन के बिना जो फूड ब्रेक डाउन होता है उसे एनारोबिक बोलते हैं। इसी टाइप से इन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है एनारोबीज। दे गेट एनर्जी थ्रू anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breakdown into alcohol and carbon dioxide are given below. So ये है हमारा anaerobic respiration equation because it is happening in the absence of oxygen. So इनको याद करना बहुत easy है। Starting में glucose है, glucose means food and food in the presence of oxygen. Food in the presence of oxygen. If we take the oxygen, we breathe out the carbon dioxide, and carbon dioxide plus water and water plus energy. So evaporation type से इधर water का use किया गया है इधर, and in the absence it is glucose same, and in the absence of oxygen अगर हम ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, इसलिए इधर डायरेक्ट अल्कोहल आ गया है एंड देन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड का उस टाइप से है एंड we get energy from the food। so इस टाइप से है। सो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो yeast are single celled organism। जो येस्ट होते हैं वो सिंगल सेल मतलब उनके अंदर एक ही सेल होता है एंड ह्यूमंस हैव टू मच सेल्स। वो एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। दे रेस्पायर, वो जो रेस्पायर करते हैं वो करते हैं एनारोबिकली। तो एनारोबिकली मीन्स इन द एब्सेंस and during the process of yield alcohol. So yield alcohol are anaerobically एक ही सेल से करते हैं अपना रेस्पायर। दे आर सो जो वो होते हैं therefore used to make wine and beer, and those yeast organisms are used to make wine and beers. Our muscle cells can also respire anaerobically. So जो हमारी मसल्स होती हैं ह्यूमन मसल्स, जो वो मसल्स होती हैं वो भी रेस्पायर करती हैं बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब anaerobically, but they also but only for a short time
वो भी सिर्फ कुछ ही समय के लिए। when there is a temporary deficiency of oxygen, जब हमें ऑक्सीजन कम आ रहा हो, और यू माइट से दैट इन द प्लेसेस व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या जल तेज भागते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, और मैनी फॉर मैनी हावर वॉकिंग फॉर मैनी हावर्स एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। सो हमें खाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, एंड बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड, बट जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए लिमिटेड होती है। सो देन anaerobic respiration take place in the muscle cells to fulfill the demand of energy. सो उस टाइम जो anaerobic respiration होते हैं वो हमारी बॉडी की एनर्जी की डिमांड को पूरा करते हैं anaerobically respiration की मदद से। एंड सो उसकी ये मसल्स रही, आई मीन इक्वेशन, एंड इन दिस ग्लूकोज इन मसल्स। सो जो मसल्स के अंदर ग्लूकोज होता है वो इन द एब्सेंस ऑफ our oxygen means anaerobic, and lactic acid plus energy. Lactic acid presence in curd, and then 6.1 this, and this page ends at the last here. And have you ever wondered why you get muscles cramp after heavy exercise? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती है वो क्रैम्प क्यों कर जाती हैं? The cramp occurs when muscle cells respire anaerobically. और जो हमारी मसल्स होती है वो क्रैम्प तभी करती हैं जब हमारी मसल्स anaerobically respire करती हैं। The particles breakdown of glucose produce lactic acid. So जैसा इधर हमें ये दिख रहा है in the equation that lactic acid is provided by the glucose, and the accumulation of lactic acid cause muscles cramp. और जो लैक्टिक एसिड होता है उसका एक्यूमुलेशन वो हमारे मसल्स को चाम्प करने में मदद करता है। वी गेट रिलीफ आफ्टर camp from camp after a hot water bath or a massage. सो हमारी बॉडी को बहुत राहत मिलती है जब अगर हमारी मसल्स क्रैम्प हो रखी हो और हम गर्म पानी में नहाएं या फिर मैसेज की मदद से। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों है होता है? सो हॉट वाटर बाथ और मैसेज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सो जो हॉट वाटर में अगर हम बात करेंगे या फिर मैसेज की मदद से हमारा जो सर्कुलेशन होता है बॉडी का वो इम्प्रूव होता है as a result. So in the result the supply of oxygen to the muscle cells increase. So ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे मसल्स तक इजीली होती है, and the increase in the supply of oxygen result in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide or water. So carbon dioxide plus water and oxygen in the breakdown of, and it's a complete oxygen result. So 6.2 breathing. So cause do this activity under the supervision of a teacher. Close your nostrils and mouth and it's activity just. So हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out of air rich in carbon dioxide. So breathing का क्या मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। That is जो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी यू माइट से दैट लंग्स एंड ये हमारे
ऑक्सीजन और इनको रेस्पिरेटरी में मदद करता है. And the taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation. So it means जब हम breathe in करते हैं, so that is known as inhalation. You might learn it as this way: inhalation in and out X. So air rich in carbon dioxide, exhalation means carbon dioxide release. It is a continuous process which goes. तो ये continuously एक process है on all the time throughout the life of an organism. कोई भी organism हुआ या फिर हम हुए, animals and the plants also breathe. You might have listened or you might have read it in a story, and it's true. And it's true. सो इनहेलाइज ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे मरते तक यानी यू माइट से जब तक हम जिंदा रहेंगे पूरी लाइफ इट हैपेंस. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट टर्म्ड एज अ बर्थ रेट. सो एक मिनट में जो एक ह्यूमन होता है वो जितने टाइम ब्रीथ करेगा उसे ब्रीथ रेट बोला जाता है. And during breathing, inhalation and exhalation take place all alternately. So बारी बारी exhalation and inhalation वो हमारे ड्यूरेशन में आते हैं, हमेशा टेक प्लेस इन. सो इट मीन्स जब भी ब्रेथ करते हैं हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. अब ब्रेथ मीन ब्रीथिंग का मतलब होता है one inhalation plus one exhalation. So this picture, and we noticed that when he released his breath after holding if you sometime he had told heavily, and can you tell him why it is was so? तो जो भूया था उसने अपनी ब्रीथिंग को रोका एंड और वो ज्यादा देर तक नहीं रोक पाया. और ऐसा क्यों? और एक ये टेबल गिवन है, आपको ये टेबल कंप्लीट करना है अपनी बुक्स में. सो ये देखिए, यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट. आप चाहेंगे सो whether it is considered or changed according to the requirement of oxygen by the body. Let us find out by doing the following activity. So here it's given an activity which you have to do. So we don't do it now. So on an average of an adult human being at the rest breathe is out and in 15 to 18 time in a minute. अगर आपकी एवरेज एज अडल्ट है, तो अगर आप आराम से ब्रीथ करोगे तो आप 15 to 18 टाइप एक मिनट में ब्रीथ करोगे. एंड ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, द ब्रीथ रेट कैन बी इंक्रीज अप टू 25 टाइम अ पर्सन इन अ मिनट. So while we exercise, not only do breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. Supplies to our cell, it spread up the breakdown of food. So supplies to our cells, it's it speeds it speed up the breakdown of food and more energy is released. अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो ब्रेकडाउन होगा फूड का वो ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा बनेगी. सो does this explains this why hungry after a physical activity.
सो आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेन अच्छे से हो गया होगा कि अगर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें भूख क्यों लगती है ज्यादा. So when you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body require supplication oxygen? So this line means जब आप ड्राउस्टी फील करते हैं क्या आपकी ब्रीथ रेट डाउन हो जाती है और क्या आपकी ऑक्सीजन सप्लायंस अच्छे से हो पाती है या नहीं. So again it's an activity here on the workpiece here and it's 6.3. How do we breathe? हम breathe कैसे करते हैं? Let us have learned about the mechanism of breathing. Normally, we take in air through our nostrils. So हम हमारे nose से breathe in करते हैं और mucus से हम breathing करते हैं. And when we inhale air और जब हम एयर को अंदर लेते हैं it pass through our nostrils into the nasal cavity. So हमारी nostril से nasal cavity तक हमारी जो ये ऑक्सीजन है ये जाता है. From the nasal cavity the air reaches to our lungs and the nasal cavity to lungs तक पहुंचती है and through the windpipe की मदद से the lungs are present in the chest cavity and in the chest cavity the lungs are in the present chest cavity and this cavity is surrounded by ribs. On the side, a large muscular sheet called respiration forms. तो उन्हीं के नीचे सेल्व चेस्ट कैविटी के बिल्कुल साथ में ही एक बहुत बड़ा मसल शीट है जिसका नाम है डायफ्रागम. Forms the flood of the chest cavity and breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. During inhalation करते समय ribs move up and outwards and diaphragm moves down. So जब भी हम breathe करते हैं so जो हमारे ribs होती हैं that moves up and the outwards dehydration moves down. The movement increases space in our chest cavity and air rushed into the lungs. The lungs get filled with air duration and step से बताया गया है कि हम breathing कैसे करते हैं and all. And here it's also same. Smoking damage lungs. Smoking is also linked to cancer. It must be avoided. So it's given in diagram. So it's a nasal cavity. We breathe from our nose and it passes through the nasal passage and nasal cavity. And this oral cavity is also here. We breathe out from here and here both. These both are interconnected. And this is pharynx. And this section is known as trachea, and this inside the ribs it's lung, and these bones which are covering the internal organ lungs are known as ribs, and the end of our this human respiratory system it's diaphragm. It's a this portion. The air provides us has various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollution, etc. जो हमारे आसपास एयर होती है उसके अंदर स्मोक, डस्ट, पॉलेंस एक्सेट्रा बहुत कुछ पाया जाता है. When we inhale the particle trapped in the air present in our nasal cavity, so it means
When we breathe in, so this dust gets trapped in the air. I'm hairs present in our nasal cavity. However, sometimes these particles may get past the airs in the nasal cavity. और कभी कभी अगर वो पार्टिकल्स ज़्यादा ही छोटे होंगे या ज़्यादा ही बड़े होंगे, so they pass through the nasal cavity to our lungs and transmission. So here we go. Sneezing express these pharyngeals. मतलब जब हम छींक लेते हैं, so जो particles होते हैं which inhaled air, dust, freeze air and etc. which enters in our body, they came out. So take care when you sneeze. You should cover your nose so that the foreign particles you expel are not exhaled by other person. Okay, everyone. So take care of this. So activities. There are two activities here. Breathe for better life. Regular transpiration breathing exercise phenomena can increase the capacity of lungs to take in more air. Thus, more oxygen can be supplied to the body cells, restoration in the presence of our releases of energy. So, for better life, we need to breathe and with the help of the supplies, body cells, and etc. So, one more activity is here. So, this page number 64, 65, and page number 66. We are going to do in the next video. So, for that, subscribe to our channel, RJ Education channel. And before also, we have given you a video in our channel that is used to the respiration in organisms, that is also about that, and in that video I have explained only the diagram and the important points in the video. So these are also the important points which I have discussed in that video. So I might think that we didn't need to replement it this. So for the next video, subscribe to our channel and subscribe to Arch Education channel for these such more videos. So bye bye students. For the next video, subscribe.